Hello students. So we will be continuing the facts of the special damages. Now there is one fact that is called Victoria Laundry versus Newman. Here we, a laundry owner, agreed to purchase boiler from N, which was supposed to be delivered in June, but in fact it was delivered in November of that year. As a result of delayed delivery, the V laundry owner lost the profit on additional laundering work, which could have accepted if the boiler had been installed in the time. And secondly, the laundry owner could not accept a remunerative dyeing contract with the Ministry of Supply. यहाँ पे एक लॉन्ड्री ओनर है, ही अग्रीड टू परचेज बॉयलर, उसने अग्री किया कि बॉयलर परचेज करे फ्रॉम एन, तो वो बॉयलर को डिलीवर करना था जून में, तो उसने डिलीवर किया नवंबर में। तो रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ डिले, जो एडिशनल लॉन्ड्रिंग वर्क उसको लेना था तो वो ले नहीं पाया, क्योंकि कारण क्या था? टाइम के ऊपर डिलीवरी नहीं हुई थी बॉयलर की। और सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे लॉन्ड्री ओनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सेप्ट कर पाया मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई की वजह से, क्योंकि सामने वाले ने बॉयलर डिलीवर नहीं किया। तो उसने कोर्ट में केस फाइल किया। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने हेल्ड किया द लॉन्ड्री ओनर वॉज एंटाइटल्ड टू क्लेम अंडर द फर्स्ट हेडिंग, यानी फर्स्ट हेडिंग में वो उसको डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बिकॉज इट इज क्लियर दैट द लॉन्ड्री वुड बी अनेबल टू डू इट्स नॉर्मल वर्क इफ द बॉयलर इज नॉट डिलीवर्ड इन टाइम। तो कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट जो इंस्टेंट है, जो फर्स्ट है, टाइम पे डिलीवर नहीं किया बॉयलर, तो उसमें आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। बट सेकेंड में जो लॉस अकर हुआ है उसमें आपको डैमेजेस नहीं मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर की वजह से एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिनिस्ट्री इज सप्लाई सिंस इट वाज नॉट स्पेसिफिकली मेड नोन टू द अदर पार्टी। आपने जो बॉयलर खरीदा था, परचेज किया था, उसको बोला नहीं था आपने कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, आप बॉयलर सप्लाई नहीं करोगे तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। इट इज मेड known to the other party, specifically made known to the other party. Moreover, it was not foreseeable when the contract was entered into it. Therefore, we can say the law does not award damages which are either indirect or too remote. तो लॉ यहाँ पे अवॉर्ड नहीं कर सकता डैमेजेस विच आर आइदर इनडायरेक्ट और टू रिमोट। जो टू रिमोट है या इनडायरेक्ट है तो उसके लिए डैमेजेस कोर्ट दिला नहीं सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स व्हाट है? इट इज ए डैमेज मीन्स ए सम फिक्स्ड अप इन एडवांस which is fair and genuine for the pre-estimate of the probable loss that is likely to result from the breach of contract। उसको liquidated damages बोलते हैं। पहले से ही एक सम फिक्स किया गया है। अगर आपको कुछ लॉस हुआ है when there is any breach of contract, ओके, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टेड विथ अ बी दैट इफ ए प्रैक्टिस्ड एज अ सर्जन इन मुंबई ही वुड पे बी 50,000। A practiced as a surgeon in Mumbai. In this case, B is entitled to recover from A such compensation, but not exceeding 50,000, as the court considered reasonable. So this is a reasonable. You have to pay the 50,000 rupees. Okay, so this is called the liquidated damages. Now what is next is exemplary or vindictive or punitive damages. See, these are the damages which are awarded with a view to punishing the guilty party for the breach of the contract. And as such, we have already discussed that damages are rewarded to compensate the aggrieved party and not to punish the guilty party. See, the damages here are, why these damages are awarded? फॉर पनिशिंग द गिल्टी पार्टी फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं इसलिए डैमेजेस पे करना पड़ रहा है। ओके, सो टू पनिश द गिल्टी पार्टी। सो एज ए जनरल रूल, डैमेजेस आर नॉट
exemplary damages are not awarded as they are punitive in nature. There are two exceptions in this rule. अभी टू एक्सेप्शंस क्या है इसमें? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी एक एक्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं. Two exceptions. Breach of a contract to marry. Here the amount of compensation will depend upon the extent of injury to the person's feelings, sentiments and emotions. Okay. So in the marriage there is a person's feelings and sentiments are also considered. Wrongfully dishonoring of the check. When a banker dishonors the check of a customer having sufficient funds to his credit, damage will have to be paid to the customer. See, when a banker is dishonoring the check and there is a having sufficient fund also, when the banker dishonors the check, the aggrieved party will suffer the loss. So in this case, the rule for the damages in such cases, the smaller the number of the check, the higher the damages. यहाँ पे जितना स्मॉलर नंबर होगा तो उतनी हायर डैमेजेस आपको पे करनी पड़ेगी अगर रॉन्गफुली डिसऑनर चेक किया तो बैंकर ने. सो नेक्स्ट पॉइंट इज नॉमिनल डैमेजेस. जिस द लास्ट हमने इसमें एक्सप्लेन किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी एंड wrongfully dishonoring of the check, that is called as a exemplary or vindictive damages. Now what is nominal damages? Nominal damages का मतलब क्या है? The aggrieved party does not suffer any monetary loss. The court will award some compensation only for a namesake. So the amount of compensation will be nominal amount. This is just to establish the right of the party. यहाँ पे सिर्फ एक right देते हैं कि aggrieved party जिसने does not suffer, जिसने जो aggrieved party है उसने कुछ loss suffer नहीं किया from the मनी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पैसे से कुछ लॉस नहीं किया है, बट कोर्ट फिर भी एक नेम सेक के लिए कॉम्पनसेशन देती है कि भाई उसका हक है. ओके, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डैमेजेस. नाउ ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस. सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ इंजर्ड पार्टी to take all reasonable steps to minimize the loss suffered as a result of breach of contract. So if the loss is suffered due to the neglect of injured party to mitigate, then such damage cannot be recovered. यहाँ पे duty to mitigate loss. So it is a duty of injured party. The injured party है, he has to take all reasonable steps. Reasonable steps लेना चाहिए कि भाई उसको loss न हो जाए, पर उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से ही उसको लॉस हुआ है एंड ही इज सफरिंग द लॉस, तो वो डैमेजेस ही कैनॉट रिकवर, यानी वो डैमेज क्लेम नहीं कर पाएगा और रिकवर भी नहीं कर पाएगा. सी यहाँ पे एक एग्जांपल है. पी टुक ए शॉप ऑन रेंटल बेसिस फ्रॉम क्यू and paid 1 month's rent in advance. Q could not give possession of the shop to P. P did not do any business for 8 months, although there were other shops available in that area on rental basis. So P filed suit against Q for the breach of contract and claimed damages for the loss suffered. तो उसमें कोर्ट ने क्या कहा? P was entitled only to a refund of his advance and nothing more, as he has failed in his duty to minimize the loss by not taking another shop in the neighborhood. So तो कोर्ट ने क्या कहा है? You can claim only the advance. So you can claim only the advance and the refund of advance will be claimed. So you will be getting only the advance and nothing more. आप फेल हो गए हैं क्योंकि it was your duty to minimize the loss by not taking another shop in the neighborhood. नेबरहुड में ही पहले ही शॉप मौजूद थी तो आप वो शॉप ले सकते थे. So difficult to assess. Now what is this difficult to assess? The fact that the damages are difficult to assess does not prevent the aggrieved party from recovering them. Here the fact that is, if there are damages that are difficult to assess, आपके साथ जो डैमेजेस हुआ है व्हेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस, बट ये नहीं बोल सकते इट डज नॉट प्रिवेंट द अग्रीव्ड पार्टी फ्रॉम रिकवरिंग देम. तो ये नहीं बोल सकते कि भाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव द डैमेजेस. नो, यू हैव टू क्लेम द डैमेजेस, यू हैव टू पे द डैमेजेस, द अदर पार्टी हैव टू पे द डैमेजेस.
Now, what is the cost of the court? Cost of the suit. The aggrieved party has the right to claim the cost of the getting the decree from the damages of the wrongdoing party. So he has right to claim the cost. Okay. The damages for the mental agony and suffering. Generally, the damages for the mental pain and suffering caused by the breach of contract are not allowed, but in some special cases they may be allowed. Here, the damages for the mental agony and suffering, it cannot be allowed. For the breach of the contract are not allowed, but in some circumstances it can be allowed. What are this? See example: a photographer agreed to take a photograph at a wedding but failed to do that, and hence the bride had no photographs of her wedding. Damages for sentimental injury or for mental agony in such cases may be allowed. Here ये नीट क्लीनली बोला है कि ब्राइड का फोटोग्राफ वेडिंग का फेल हो गया है, तो डैमेजेस फॉर द सेंटिमेंटल इंजुरी इन सच केस में भी अलाउड यहाँ पे अलो किया गया है. तो यू कैन क्लेम डैमेजेस in such circumstances. Damages in sale of goods. Under a contract for the sale of goods, the measure of the damages is difference between the contract price and the market price at the date of breach. Okay, so the damages claimed can be the contract price and the market price. The damages in sale of goods. And damages in case of quasi contract, damages will be paid as if the breach is of a general contract. जनरल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वही डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. इंटरेस्ट एज ए डैमेजेस. जनरली द इंटरेस्ट कैनॉट बी रिकवर्ड लीगली ऑन डैमेजेस, बट where a contract provides that the amount should be paid without interest by a particular date, and on default it will be payable with interest. In such a case, interest may be allowed if it is reasonable. इंटरेस्ट एज ए डैमेज. तो इंटरेस्ट के ऊपर, डैमेजेस के ऊपर इंटरेस्ट कब क्लेम कर सकते हैं? व्हेन ओनली इफ इट इज रीजनेबल. ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी सीइंग सूट अपॉन suit upon quantum merit. See, other remedy for the breach of the contract available for the affected party is to file a suit upon quantum merit. Now, what is quantum merit? Quantum merit means as much as is earned or in proportion for the work done. Okay, so when there is no agreement to pay remuneration for any service rendered or work done under the contract, then this rule can be evoked. So, where one party to the contract has performed a part of his promise and is prevented by other party for completing the remaining part of the promise, then he can file a suit upon quantum merit. So in this suit he can claim for the value of what he has done. So see, we will see an example. A, an actor, agreed to perform a particular role in a TV serial for B. The serial was of 50 episodes. After the shooting of 10 episodes, B dropped the idea of continuing the further serial. Here, A may claim reasonable compensation for working in a 10 episode on the basis of quantum merit. Okay? So when work has been done and accepted under a void contract, damages on the basis of quantum merit may be claimed. See example, A was appointed as a managing director of a company by non-qualified director. He can file a suit against the company for recovering of remuneration for the services which he has rendered in the company as a managing director on the basis of principle of quantum merit. See, when a person takes the benefit of non-gracious act, he must compensate for that act to another. Similarly, a person who has committed a breach of contract can also file a suit on quantum merit if the contract is divisible and the other party has enjoyed the benefit of the part which has been performed, although he had an option of declining it. Sorry. So this is the example for the quantum merit. So two examples have been given for the quantum merit.
Suit for specific performance. What is suit for specific performance? Specific performance means the actual carrying out of the contract as agreed. This relief is generally granted where monetary compensation is not an adequate remedy. However, it would not be granted if the contract is for personal service. यहाँ पे monetary compensation, sorry, I'm really very sorry. So the relief is generally granted. यहाँ पे suit for specific performance में क्या होता है? Monetary compensation is not an adequate remedy. अगर वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, ओके, द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. I'm really very sorry. Again, I'll tell you. Suit for specific performance. Suit for specific performance. So, suit for specific performance means actual carrying out of a contract as agreed. जैसे बोला गया उसी contract को carry करना actually. So, this relief is generally granted when monetary compensation is not an adequate remedy. ये relief कब ग्रांट की जाती है? जब मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन यानी पैसे देने से भी वो रेमेडी नहीं है. सो हाउएवर इट वुड नॉट बी ग्रांटेड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ ए पर्सनल सर्विस. वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ये कब ग्रांट किया जाता है? जब मॉनेटरी इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी बट पर्सनल नेचर का है, तब रेमेडी वो भी नहीं मिलेगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सूट फॉर injunction. The injunction is an order of a court restraining a person from doing a particular act. Injunction यानी एक इंसान को restrain करता है, रोक लगाता है कि ये particular act आपने नहीं करना है, ये particular काम नहीं करना है. So thus injunction is a preventive relief. It is generally invoked in the case of anticipatory breach of contract. एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने पिछली वीडियो में कहा है. एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी प्री मैच्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट का समय आता है उसके पहले ही सामने वाला बोल देता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा करके. सो वेयर डैमेजेस वुड नॉट बी एन इक्वेट रिलीफ. where damages would not be an equate relief. See, injunction is an order of a court restraining a person from doing a particular act. यानी एक रोक लगाता है, ये काम नहीं करना है, उसको इंजंक्शन बोलते हैं. कोर्ट की तरफ से वो एक इंजंक्शन सूट फाइल करते हैं. सो दैट इंजंक्शन इज ए प्रिवेंटिव रिलीफ. ये एक रिलीफ है. इट इज जनरली इन्वोक्ड इन द केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर डैमेजेस वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रिलीफ. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. पी द ओनर ऑफ ए बंगलो agreed to sell his bungalow to Q, but afterwards, if P tries to sell the said bungalow to R, then Q in this instance can file a suit for injunction and thereby restrain P from doing so. So this is called suit of injunction. So we have completed the breach of contract. Breach of contract में क्या था? Actual breach of contract, anticipatory breach of contract. उसके बाद anticipatory breach of contract, there is a remedy in the court of law for the breach of contract. We had discussed about when there is a rescission of the contract यानी जिसने कैंसिल किया, suit for the damages, suit upon quantum merit, suit for specific performance of contract and suit for injunction. So we have discussed in this breach of contract all these things. So we will be completing the first chapter of the nature of the contract. So next chapter we will be taking law of partnership. Okay, see you.